बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का सिलेबस शेयर करेंगे। सब्जेक्ट ज़ूलॉजी, चैप्टर नंबर 1 रिस्पायरेशन, जिसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन फ्रॉम नोज टू लंग्स, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसेस, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, एम्फीसीमिया शामिल है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, जिसमें डेफिनेशन, ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन। इसके बाद इसमें एक्सक्रीशन और रिलेशनशिप बिटवीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हैबिटेट, एक्सक्रीशन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एंड फंक्शन ऑफ किडनी। इसके बाद हमारे पास किडनी फेलियर, हेमोडायलिसिस, किडनी फेलियर एंड डायलिसिस, then kidney transplant associated problem and thermoregulation. Then हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्पंजी बोन एंड कम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चर हमारे पास है। देन कार्टिलेज, फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें एक्सियल एंड अपेंडिकुलर आ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। इसके बाद उसमें पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, स्लिप डिस्क एंड स्पॉन्डिलोलाइसिस। देन जो इसमें डिजीज़ आ जाती हैं, डेट इज शियाटिका एंड आर्थराइटिस, देन मसल्स एंड टाइप ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो एक लॉन्ग टॉपिक है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ। एंड देन मसल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके एंड पोस्टीरियर लोब, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देयर इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टॉपिक इज़ फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन। इन्होंने गलती से शायद लिख दिया है, खैर। फिर उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, फीडबैक मैकेनिज्म। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ बिहेवियर, जिसमें लर्निंग एंड देयर टाइप्स, ट्रायल एरर, जितनी भी इसकी टाइप्स है सारी हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें जितने भी टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं सब टॉपिक्स इंक्लूड हैं। फीमेल में भी इसी तरह सारे टॉपिक्स ऐड हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द डिसऑर्डर्स हैं इसमें। इसके बाद इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऐड है। तो ये था हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्ट ज़ूलॉजी का जी। तो बॉटनी का क्लास 12 का जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है, इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से एक चैप्टर दैट इज़ एवोल्यूशन वो इंक्लूडेड नहीं है। इनहेरिटेंस में हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंट्रोडक्शन, independent assortment, which is most important topic of this chapter, exception to Mendelian inheritance, incomplete dominance, complete dominance, and the table. Then the multiple allele blood group system, ABO blood group system, RH blood group system, polygenic inheritance of human skin color, gene linkage, crossing over, gene linkage, detection of gene linkage, crossing over, sex determination, sex linkage, and the sex linkage in human and sex related traits. Now the next chapter we have is this chromosome and DNA. 16 topics हैं इसमें, that is the structure of chromosomes, chemical composition of chromosome, which is the most important topic, the molecular concept of a gene, alleles as the alternative form of gene. Then the DNA replication, which is the most very important topic of this chapter. Then the models of DNA replication, Mendelssohn and Settle experiment, mechanism of DNA replication, central dogma of biology, gene and genetic code, characteristic of codon, transcription, which is also an important topic. Then the post-transcriptional modification of mRNA, translation and table, 23.4. Then we have the next chapter is man and his environment, which is a very important and a little bit tough chapter, which have mutation, source of mutation and types of mutation. These are the topics of previous chapter.
Man and his environment has geochemical cycle, primary reservoirs, nutrients, nitrogen cycle, ecological succession, yeah, carbon dioxide, global warming, acid rain, ozone depletion. Then the next chapter, which is the most important chapter of the botany, that is cloning of gene cloning, DNA technology, role of molecular seizures and DNA ligase, polymerase chain reaction, DNA analysis, application of DNA analysis, procedure of DNA analysis, genome maps, tissue culture, and transgenic plant. Now the next chapter we have is the biology and human welfare, that is the vaccination, which is an important chapter. So role of vaccine in preventing disease. So this is our last chapter.